2007, Doctor and Philosopher of Indian Culture. He also won 3 Limca Book of Records holder in CPR 10. He is gold medalist, TEDx speaker and recipient of 5th FICCI Healthcare Personality of the Year Award 2016. He also have served as a president of Confederation of Medical Association of Asia and Ocean, president Heart Care Foundation of India, group editor in chief IJCP group, past national president and past honorary secretary general Indian Medical Association and past president Delhi Medical Association and IMA New Delhi. He has been branch former ethics committee member Medical Council of India and former chairman ethics committee Delhi Medical Council. Friends, on behalf of all of you, I welcome Dr. K. Aggarwal ji to come up and give their speech and give blessings of him. Thank you very much again and welcome Dr. K. Aggarwal. Dr. Aggarwal, welcome, personal welcome. And one dimension which I would like to highlight here to the audience, Dr. Aggarwal is somebody who believes in integrating the various systems of medicine as well. And he is very strongly convinced about the value of integrated systems of medicine and spirituality in total wellness. There is no better speaker on this area than KK. Sir, welcome. Thank you, Dr. Subra. Thank you, Harish ji, and thank you, Basim ji, for calling me. And because the time is short, I'm going to be very brief. And in a COVID era, we are talking about a non-COVID illness, but it is still a COVID illness. The reason being, the first death in India of COVID was an Italian doctor who developed COVID in Jaipur. And after he recovered, he died suddenly of a heart attack. Long time back when I was also in Rotary and I always wanted a project in Rotary that no Rotarian should die of a heart attack. And the reason being, they are selfless workers, educated in the society. There is no reason why they should die of a heart attack. And today, as subah se, I have dedicated my day that nobody should die of COVID. And we have now come out with large number of, I've spoken to more than 1,000 COVID patients in Delhi and come out with trigger factors, what precipitates death in COVID. And we should be able to prevent that. मैं जो सिंपल वे में आप लोगों को ऐसा एक फॉर्मूला जो आप लोगों ने हो सकता है मेरा सुना हुआ भी हो, मैं उसी के माध्यम से हार्ट अटैक को बचाने का फॉर्मूला बताऊंगा. एंड दैट फॉर्मूला इज फॉर्मूला ऑफ 80. अगर आप 80 साल तक बिना हार्ट अटैक के रहना चाहते हैं तो 80 का फंडा याद रखें. तो दिस इज अ सिंपल वे ऑफ रिमेम्बरिंग. Wherever a number comes, remember 80. कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर और पेट की चौड़ाई 80 से कम रखें. So if somebody says, what should be your blood pressure? You say lower वाला 80. You say, what should be your cholesterol? He says गंदा कोलेस्ट्रॉल 80. You say दिल की धड़कन कितनी होनी चाहिए? You say 80. You say पेट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? You say 80. सो दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर सब 80 से कम होना चाहिए. सो व्हाट इज योर शुगर? 80 से कम कर दो. सो यू गो टू योर डॉक्टर एंड से कि अगर एक पैरामीटर है तो उसको 80 से कम कर दो, 2 है तो उसमें से ढूंढो कौन सा वाला 80 से कम करना है, 3 है तो ढूंढो कौन सा वाला 80 से कम करना है. नॉट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर. इसके अलावा 2 मेरे फंक्शंस हैं, वो किडनी फंक्शंस हैं और लंग फंक्शंस हैं. दोनों को 80 से ज्यादा रखो. That means my kidney function should always be more than 80% and my lung function should always be more than 80%. आज की डेट में अगर मेरे को ये 5 चीजें हैं, कोविड हो भी जाए तो मुझे चिंता नहीं. अगर मेरी लंग फंक्शन 80 से ज्यादा है, कोविड होगा तो मैं मैनेज कर लूंगा. मेरी किडनी फंक्शन 80 से ज्यादा है, कोविड मुझे तंग नहीं करेगा. और अगर मेरा ब्लड प्रेशर पूरा कंट्रोल्ड है, शुगर मेरी कंट्रोल्ड है, कोविड मुझे तंग नहीं करेगा. तो ये मेरी फिटनेस कोविड पे भी काम करेगी.
और इसके अलावा जो मैंने कहा कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर और पेट की चौड़ाई 80 से कम रखें, तो इसके लिए करें क्या? सबसे पहले एयर पोल्यूशन 2.5 एंड एयर पोल्यूशन 10 एंड नॉइस पोल्यूशन तीनों को 80 से कम रखें. So reduce your air pollution in your atmosphere, PM 2.5, PM 10 and noise pollution, keep it lower than 80. That's one. नंबर 2 is रोज 80 मिनट चले, एक हफ्ते में 80 मिनट तेज चले, एक मिनट में कम से कम 80 कदम चले, और जब तेज चले तो 80% अपना हार्ट रेट को मेंटेन करें. सिंपल हो गया 80 का फॉर्मूला. 80 मिनट चले, 80 मिनट तेज चले. इसके अलावा खाने में क्या खाएं, खाने पीने में क्या खाएं? कम खाओ, एक बारी में 80 ग्राम से ज्यादा कैलोरिक फूड ना हो. कैलोरिक फूड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन कैलोरिक फूड. एक बारी में 80 ml से ज्यादा कैलोरिक लिक्विड ना हो. शराब ना पिए, पिए तो 80 ml से कम, हफ्ते में 80 ग्राम से कम. तो जिन लोगों को शराब पीना अलाउड है वो 80 ml से कम, विच इज 2 पैक्स, एंड 80 ग्राम से कम, that is 1 pack is equivalent to 10 grams of alcohol with that. यहाँ भी 80 80 80 80 80 80 आ गया. Now give your back 80 cycles of pranayam, which is parasympathetic breathing, ताकि लंग कैपेसिटी बढ़ जाए. लंग कैपेसिटी बढ़ने के लिए 80 साइकिल प्राणायाम के साथ में अगर पेट के बल सोते हैं तो कोविड आपको तंग नहीं करता. सो डू 80 साइकिल्स ऑफ प्राणायाम. साल में 80 दिन अनाज मत खाएं, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, शुगर आपका नहीं बढ़ेगा. सिगरेट ना पिए, पियोगे तो 80,000 रुपए का स्टेंट लग जाएगा या कोई ना कोई आपका ऑपरेशन लग जाएगा. सो एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड 80. साल में 80 दिन धूप में बैठे, विटामिन डी मिलेगा आपको. अगर आप ऐसा करते हैं तो चांसेस हैं 80% कि 80 साल की उम्र तक आपको हार्ट की तकलीफ नहीं होगी. हो भी गई सो व्हाट. डॉक्टर से पूछो, वो तो 80 मिलीग्राम की 2 गोलियां होती हैं, मुझे डाली कि नहीं डाली? 80 मिलीग्राम की एस्पिरिन और 80 मिलीग्राम की स्टैटिन. तो वो गोलियां खाओगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा. हो भी गया सो व्हाट. तो फिर डॉक्टर से पूछो कि मेरे को एंजियोग्राफी की जरूरत है कि नहीं है, तो वो बोलेगा कि आप 80% एक्सरसाइज ट्रेडमिल का टेस्ट करो, उसमें बीमारी है तो हम एंजियोग्राफी के बारे में सोचेंगे. सो व्हाट, एंजियोग्राफी हो गई. तो पूछो डॉक्टर से, मेरा ब्लॉकेज 80 से कम है कि 80 से ज्यादा है? 80 से कम है तो मेडिकल ट्रीटमेंट, 80 से ज्यादा है तो कुछ कर ले. वो बोलता है कि बॉर्डर लाइन है, तो बोलेगा ठीक है, हमारे को जो है आप परफ्यूजन टेस्ट कर लो और उसमें बताओ कि 80 से कम है कि 80 से ज्यादा है. हर जगह पे नंबर 80 आ रहा है. अगर आपका वो 80 से ज्यादा है तो कुछ नहीं करना. 80 से कम है तो बोलो ठीक है, आप एंजियोप्लास्टी या सर्जरी कर लो तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, और मृत्यु भी हो गई तो सो व्हाट. अगर मैं मर भी गया तो सो व्हाट, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे रोटेरियन बैठा होगा जिसे सीपीआर आता होगा, जो मेरे को 10 मिनट के अंदर अंदर 10 के फॉर्मूले से मेरे को जिंदा कर देगा. कि मरने के 10 मिनट के अंदर, अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक, लॉन्गर द बेटर. 10 into 10 कम से कम 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मेरी छाती पीटेगा और मैं उठ के बैठ जाऊंगा. So this formula of 80 can give you a overview for not only preventing heart attack, also what Mrs. Dr. Khanna is saying, आपका कैंसर भी बचेगा. बिल्कुल बात तो वही है, बातचीत तो वही है. अगर आपका खान पान सही है, आपकी एक्सरसाइज सही है, आप सिगरेट नहीं पी रहे, तो कैंसर भी नहीं होगा, हार्ट अटैक भी नहीं होगा, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी नहीं होगा. डॉक्टर सुब्रमण्यम को भी खूब टाइम मिलेगा गाना गाने का. अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता जाएगा तो इनके गाने छूट जाएंगे उसके साथ में. सो बेसिकली द मैसेज इज वेरी क्लियर दैट दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर, पेट की चौड़ाई और दिल की धड़कन को 80 से कम रखें. इसके लिए 80 मिनट रोज चलें, 80 मिनट तेज चलें, एक हफ्ते में 80 मिनट तेज चलें, एक मिनट में कम से कम 80 कदम चलें. जब चलें हार्ट के लिए तो 80% हार्ट रेट को मेंटेन करें. दिन भर में कम खाएं, एक बार में 80 ग्राम कैलोरिक फूड से कम खाएं, 80 ml कैलोरिक लिक्विड से कम लें. साल में 80 दिन अनाज मत खाएं. दिन भर आप 80 साइकिल पैरासिम्पैथेटिक ब्रीदिंग की करें. साल में 80 बार ब्लड डोनेशन करें. रोटरी क्लब का इन्वॉल्वमेंट है.
अपनी जिंदगी में 80 बार ब्लड डोनेट करें, ताकि रोटरी का काम भी साथ में चलता रहे। और अगर आप ऐसा करोगे तो जैसे मैंने कहा 80 मिलीग्राम एस्पिरिन, 80 मिलीग्राम आपका स्टैटिन, और हार्ट अटैक डेथ भी हो जाए तो कोई ना कोई आपको बचा देगा। और आखिरी में, क्योंकि मैं चाहूंगा अभी मेरे पास में 7-8 मिनट है जो क्वेश्चन आंसर्स हो जाएं अगर को उसके अंदर में, और अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो मैडम खन्ना जी के लिए, सुरेश भसीन जी के लिए, हरीश गौर जी के लिए और सुब्रमण्यम जी के लिए जब आप तालियां बजाएंगे तो कम से कम 80 बजाइए, क्योंकि जो ताली बजाता है उसको हार्ट अटैक नहीं होता। क्योंकि हमें लगेगा हमारे लिए तालियां बज रही हैं, लेकिन ताली आप अपने लिए बजाओगे क्योंकि आपको अपने आप को हार्ट अटैक नहीं करना। याद रखिए 2 चीज, जब भी रोटरी के अंदर में कोई लेक्चर देने आए 80 बार तालियां बजाइए और जिंदगी में 80 बार डोनेट करो ब्लड को। ना कैंसर होगा, ना हार्ट होगा, ना आपको कभी हार्ट अटैक होगा। आई लाइक टू हैव क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम पीपल। वी हैव some time to take question answers. Subra. Right. I think nobody could have put it better, and no wonder Dr. K.K. Aggarwal has been one of the most successful speakers on the TED Talks as well. I think he has clarified almost everything that can make sure you remain healthy. I'm sure there will be a few questions that people would be having. But let me begin by asking Dr. Aggarwal, at what age or at what stage should people start having their regular health checks in addition to what you have recommended? Blood pressure at age 4. Your first blood pressure should be at age 4 to pick up congenital hypertension. And then every time you change, that means you are changing after 4th is the first class, then you are changing at 10th, then you are changing at 12th, then you are whenever there is a change or a stress in your life, your marriage, your profession, every time you have a rise in your profession, get yourself checked up. Great, lovely. Now I think I will invite questions from the audience. You know, Dr. Aggarwal has limited time, so we will request you to be very brief on the question. Unmute yourself, identify yourself, ask your question, and go back to muting yourself immediately. And please, one at a time. Can we start? Doc, I would recommend that people put their questions on the chat box rather than ask them themselves. It sounds a great idea. Will you do that, please? I think you can put your thing on the chat boxes. We'll pick it up from there. In the chat box, because if people were to talk over each other, it will be impossible to monitor it. Fair enough. I think it's a good idea, Rohit. Can I have the first question? I'll just have a look what's come through. Well, Dr. Aggarwal. Subra, before you speak out the first question, I want to dedicate my lecture to Rajput Singh, Sushant Singh Rajput, who committed suicide today in Bollywood, the one who acted in Dhoni's film. I want to have this message because if you read his last message, which he tweeted a couple of days back, clearly shows signs of suicidal ideation. He writes the way he has written, so we should remember that anybody who has a suicidal ideation will commit suicide. Similarly, anybody who has a heart attack signals will get a heart attack. Pick up those signals, and the signals are very clearly. Any pain which is less than 30 seconds is not a heart pain. Any pain which can be pinpointed by a finger is not a heart pain. Anything unusual, anything for the first time, anything which cannot be explained, don't ignore it. अगर आपको ऐसा लगता है छाती के बीचों बीच किसी ने हाथी ने पैर रख दिया हो, घबराहट हो गई हो, जलन हो गई हो, दर्द हो रहा है जिंदगी में पहली बार एग्जॉशन हो रहा है, forget, it can be a heart attack. No heart attack will come without signals. No suicide will happen without a pre-suicidal ideation. Pick up those signals, identify your risk, remember those signals, and if you catch those signals in time, you will not die. Yes, go ahead with the question. Great. One of the questions which has come is, what does one need to do in these COVID times when you need an urgent medical treatment for a cardiovascular illness?
See, there is a fear, and let me spend a couple of minutes and let it be the last question. The reason being, I will take 4 minutes to answer this question. In the last 1 week, I have spoken to 1,000 COVID patients. I've created a group of COVID patients. सुबह 8 बजे हम लोग Zoom पे मिलते हैं and we listen to each other, एक दूसरे का डर निकालते हैं. मैंने जब 1000 लोगों से बातचीत करी, नंबर 1 घर घर में इस वक्त में कोविड है और जिसको भी कोविड है सब घर के अंदर में 4, 5, 6, 7 लोगों को कोविड है. दैट्स सेकंड. थर्ड, कोविड का पहला निशान डायरिया है. सबसे पहले जिसको डायरिया हुआ समझ लो उस घर में सबको होगा. नेक्स्ट, अगर आपको लॉस ऑफ टेस्ट हो गया, लॉस ऑफ स्मेल हो गया, यू आर ए नॉन सीरियस कोविड. कुछ नहीं करना आपको. कोविड का बुखार 14 दिन तक रह सकता है. एंड द ट्रिगर फॉर कोविड इज ओनली वन, and that is anoxia, anoxia, anoxia. जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम हर पेशेंट की सर्जरी करने से पहले अगर उसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है या हाई रिस्क है, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन देते हैं ताकि वो सडन डेथ ना हो. उसी प्रकार से हर वो पेशेंट जो हाई रिस्क है उसको आप कोविड होते ही लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन दे दो, ही विल नॉट डाई. I will say he shall not die because I'm saying emphatically, because I'm live, you are live on Facebook, I'm saying it with very conviction. After talking to 19 countries of medical association where I'm the president, I am sure in my mind that if we give low molecular weight heparin to all high risk individuals, they have no chance of getting a death. इसलिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिसको हार्ट की तकलीफ है, सब लोग पापा को बचाओ, क्या हो गया, डायबिटीज है, उनको कोने में रखो. पीपल आर स्टार्टेड थिंकिंग डायबिटीज को कोविड हो गया मतलब मर गया, हाइपरटेंशन को कोविड हो गया मतलब मर गया. दैट्स नॉट करेक्ट. रिमेंबर देयर आर 10 crore diabetics in India and 10 lakh diabetics die every year without COVID. And the number of deaths because of COVID is less than 10,000 even today. Not more than 4,000 diabetics might have died. And I'm 100% sure this year there will be less number of diabetic deaths because we are preventing ourselves, we are taking care of ourselves. So don't, if you have a NCD, if you have diabetes, obesity, cancer, so what? The answer is so what? We have now identified the trigger, and with that trigger, you should be able to manage very, very, very properly. Don't be afraid of going to the hospitals. Don't be afraid of postponing your procedures. This shouldn't happen that after 1 month, we start getting all patients because they have not gone to their doctors ending up with heart attack because of not going to the doctors with that. So with that, I have 1 more minute. I think I would like to leave. Surya. That has been very, very helpful. Again, because a lot of people have concerns about COVID at this point in time. Can I just ask you, is there any specific medicine which you today can say has established adequate evidence apart from the low molecular weight heparin? So normally this COVID presents with 7 different ways. This COVID presents as a viral. Majority of the people require no drug. In some cases, it causes more polymorphs than lymphocyte. There we give an antibiotic, doxycycline or azithromycin. In some cases, it is causing low CD4 count. There we are giving lopinavir and ritonavir anti-HIV combination. In some cases, it is causing hypoxia. We give oxygen, low molecular weight heparin and remdesivir. In some cases, it is causing cytokine crisis where we give IL-6 inhibitors. There are specific treatments available to reduce the mortality at every different step. If you're going to give a generalized treatment to everybody, you are not going to get the result. But the one thing is very clear that in Delhi, we are in community spread. The number of cases they are reporting multiplied by 30, and that is the number of cases we are getting every day. And the mortality, you divide it by 30, the mortality in Delhi is less than 0.5%. And that also is manageable, preventable, and controllable. I think I can ask Suresh ji and I can ask all the DJs. I think we should have a separate session on COVID era, taking the fear out, and where we can bring a faculty and you can make it open to everybody. And I'm sure if you do that,
I do a COVID program every day, which is attended by 1 million people every day. So that will be something which can be attended by every day. And we can literally take out the fear from the people's mind. So That's with folded hand, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, बाकी सबको नमस्कार. I like to leave. Thank you. KK, thank you so much. As always, I think you have so much clarity. And thank you for the last comment. I think it is very, very essential for all of us to understand COVID better, and particularly with a view to face it without fear. And as always, it's such a pleasure listening to you. Thank you so much. Governor?